So start allowed. Okay, thank you to all. Good evening to all learners. Good evening, good evening. Very good evening, sir. So start the registration start करो. So as we are belonging to Odisha. Voice clear होची? देवेश, hello. ना सर Voice वॉइस clear? क्लियर होनी ठीक से सर वॉइस क्लियर Clear होनी होनी? नहीं सर क्लियर होनी Voice clear है ना? Hello. ये दोनों से तो छाड़ो ना. आज्ञा सर होउची वाईफाई ना नेट. ହେଲା? आज्ञा हला सर हला कंटिन्यू करन सर. Okay. So we now proceed to discuss in block 2 as the rural development, and that is the development of human resources, situation of rural children, development of the rural children, development of human resources of any nations. जे कौनसी देशर मानव संबल plays or human resources plays one dominant role to develop economic, political and social situations on high priority basis. So development of human resources to build in rights, health care, supplementary nutrition and educational facility. Voice clear होची? Hello. Hello. आज्ञा क्लियर होची सर. कंटिन्यू करंतु. सर वॉइस हैं? हाँ, अंकिता कौन को चुप? सर मझिरे ब्रेक हेलो अंकिता. सर वॉइस सर मझिरे मो तो टावर तळे रहिगिरी पाठ पढौछि. हेले भी सर मो जोठी पाठ पढौछि टावर तळे रहिगिरी पाठ पढौछि. बुझि पेलो ना? आज्ञा सर. Okay. So गोटे देशर नेशन बिल्डिंग पाए how to build the nations, that depends on the good health care, supplementary nutrition, educational facilities. So these aspects is very essential. As qualitative human resources is very essential for the country's growth and economic development. Hence, in this concept, that India in 0 to 19 years, namely nearly 400 million. A large segment of this population, 0 to 19 years, that is a large segment of the population who lives in rural area in our country. So that is why, as they are increasing the expenditure and more resources are required for the development of the 0 to 19 years of age group, so that children do not have stay hungry and that remain poor. So so preventable diseases, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର disease ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, lack education and training facilities, that also hinders the development of the childhood. So nowadays the demographer trends about the population, child population in rural areas, like age structure, for example 1 to 2 years, ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3 to 5 years,
and 6 to 10 years, 11 to 13 years, and 14 to 15 years. These are the more relevant for planning purposes. This age up to 14 to 15 years from age group 1 to 15 years that require planning. How to grow and develop their status. As you may have guessed, the early childhood that below 2 years are more important. Child survival. Shishu Mrutuhara, how to break that below 2 years. And that is why, while the 3 to 5 year period, it is important for early child stimulation program. How to stimulate the health and mind. How to stimulate the children. And thirdly, 6 to 11 years relevant for primary schooling. 6 to 11 years, the children require primary schooling. And in this concept, the magnitude for whom services have to be provided if all children are covered indeed to grow their health and education. And then that will have a very good impact on the nation building. We should give in priority on the children. Hello, Suman, hello, Suman, mute kara. Howling, howling. Suman, Kalyan de mute kara. Suman, hello. Suman Kalyan mute kara. Howling FC. So girl child. So now we came to the conclusion that different age group as per the demographer. Demographer means that those scientists who studies the human population. Demographer कहले जनसंख्या विद जो माने कि जनसंख्या उपरे गवेषणा करिथांती एवं जनसंख्या किभली गुणात्मक मानरे गोटे देश रे अभिवृद्धि घटिबो that will have a very good impact to develop the democracy structure and democracy government in a country. So that is why 0 to as the adverse sex ratio in our country. The adverse sex ratio in our country, specifically those states are more literacy in weak positions. So only one state, that is Kerala, having 100% equal sex and more supported to girl child. So there are different reasons why the people are prefer more the boys than the girl child. What are the reasons? There are different social custom traditions, reasons why people prefer male child than over the female child. The rural child status nowadays is a very crucial discussion. That India is the largest population, child population in the world. Children in the age group of 0 to 18 lives in rural area. Gangonda Ansolare 0 to 18 age structure of pila mane adhikansh Gangonda Ansolare basbas karitanti. So it is inevitable to develop the girl child in rural areas by which the country will grow and their future generation will develop and educationally and scientifically in every respect the country will develop. So health status, infant mortality, health status hame dekhiba the infant mortality ratio was high during British period due to superstitions. अंधविश्वास पाई ये ब्रिटिश शासन समय हमें देखी चंती जे शिशु मृत्युहार यथेष्ट हार अधिक थिला. आफ्टर अचीवमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस स्वाधीनता हासिल करिबा परे मध्य शिशु मृत्युहार कंटिन्यू कला ड्यू टू डिफरेंट डिजीजेस एपिडेमिक्स एंड दैट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ communication insufficient supply of the health provisions, so that the rate was high.
and and increase in literacy, so that infant mortality rate slowly declined. Infant mortality rate which was 136 for 1000. प्रति हजार रे 146 जन ड्यूरिंग 1951. 1951 मसीह रे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो 19 जेतल फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम देश रे इंप्लीमेंट करा जायतिला सेते बेले रे पोजीशन जे हमर 146 जन प्रति हजार पिला मानक मध्य रे 146 जन शिशु मृत्यु हार हम देश रे घटुथिला. दैट वाज रिड्यूस्ड 2002 2002 बेलू ता कमीगला प्रति हजार रे 64 जन शिशु मृत्यु हार. कारण इन केयर हेल्थ प्रोविजन्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस. तेणुक डेभलप है विभिन्न प्रकार विकासमूलक कार्यक्रम है. फूड न्यूट्रिशन बोर्ड गठन है. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंप्लीमेंट करागला. प्राइमरी हेल्थ सेंटर मान खोलागला. गवर्नमेंट एंड एनजीओ माध्यम विभिन्न प्रकार अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कले. तापर शिशु मृत्यु हार अनेकांश आम देश ह्रास पाइला. सो आम मुख्यतः रूरल चिल्ड्रेन उपरे गुरुत्व दबा एभली शिशु मृत्यु हार कमिबो एवं देश में फ्यूचर जेनेरेशन विकास पथरे देश को आगे नवा पाई. सो दैट्स व्हाई मेनली दैट हाउ टू develop the mind, spirit of the children in the rural areas. So that India disburses about 16 million tons of food grains annually through its targeted public food distribution PDS system madhyamare, and that midday meal scheme also afforded to the children in different organizations, through different organizations. There are 4 segments critical to food security, namely nutrition, poverty alleviation, and agriculture disaster mitigations. So that can be addressed by 4 important points like food for work, food for education, feeding, disaster response, या food security मुख्यतः focus करता है. So apart from this, health and nutrition, that educational status is very essential for the country. So literacy rate and how to grow. During 1951, about 18.33% was literacy rate in our country. 2001, about 65% rate. Being literacy continuously in our country, and that can increase in retention. Sir, your voice is breaking. But sir, आपनकर voice break होची clearly किछि सुभा जाउनी. ना सर क्लियर होनी. हेलो वॉइस क्लियर होला सेपटो क्लियर होची. आज्ञा सर एबे सुभा होचे ठीक से. वॉइस क्लियर हेलो. हां सर. सर एबे क्लियर. आज्ञा एबे सुभा होचे. और ठीक है मधुर टिके ऑन ऑफ करबा. वॉइस क्लियर होची. हेलो हेलो लिसा क्लियर होची की. हां सर आज्ञा एबे क्लियर वॉइस. So literacy rate which was only 18.33 during 1951, but it is developed. The ratio has been developed to 65% during 2001, and that Bihar, Jharkhand, and Uttar Pradesh and Odisha, that literacy
rate was not so high. Only one state we know, that Kerala, having 100% achievement of 100% literacy. The government of India is fully committed to the goal of universalization of elementary education. We know that Bharat Sarkar सार्वजनिक इनोवेशन सार्वजनिक କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ as for the part I of the Indian Constitution is a welfare country. ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାରତ indicate କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜନମଙ୍ଗଳ we have been discussed previous day. So that how to achieve the 100% literacy, because education is the backbone of the democracy. People will become aware and select and elect the proper candidate who will rule over the country and provide good administration. Then the country will become welfare. That depends on the literacy rate. ठीक साक्षरता ऊपर depend करता. So education girl child is a very important concept for our country. That state in which net enrollment ratio for girls is below 70%. This set should be given priority, like Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Odisha. State with gender gap of 10% or more is primary enrollment levels. That the state like Haryana, Punjab and Gujarat, and high risk state where enrollment and gender parity might be compromised by HIV/AIDS or civil conflict. The state like Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, that belongs to Jammu Kashmir, prolonged that the people mostly suffer of HIV/AIDS. Maximum people live in this area are involved in HIV/AIDS. So that is why in this state the children are deprived from primary education. So children at work structure, the children, ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନରେ କିଭଳି involvement ହେଉଛନ୍ତି, why the parents are prefer and send their children to different work activities and house and they will into their separate families typically सर पुणी सुना जाऊनी हेलो प्लेस चेंज करते प्लेस चेंज करवा सेटिंग के बाद देखिए केमते करिया चलो हेलो वॉइस क्लियर आसला हेलो हाँ सर आज्ञा सर आसला आसला हाँ सर हां सर बोला वॉइस क्लियर आसला तो हेलो हां सर आज्ञा सर सुभाष आज्ञा सर आसला So let us discuss that children at work.
We know that our children, the parents prefer that and send their children to different hotel, motels and dhaba. Why? They will earn something and support their family. So that is why those people belongs to category of poverty and scheduled caste, scheduled tribe. Hello, voice clear हो नहीं? ହଉଛି ସାର୍ ହଉଛି କ୍ଲିୟର ହଉଛି। ठीक है। So nearly 90% child works are engaged in agriculture and allied activities in rural areas. गाँ गंडा अंचल रे कृषि क्षेत्र एवं सहायक कृषि क्षेत्र, the allied activities of agriculture like dairy, fishery, goatry. Hello, पढुची 6 ରୁ 7 କ୍ଲାସ୍। PK साहू, hello PK साहू, PK साहू, hello PK साहू, PK साहू, hello. So nearly 90% child workers are engaged in agriculture and allied activities. 90 भागରୁ ऊर्ध्व पिला माने विभिन्न प्रकार कृषि क्षेत्र एवं सहायक कृषि लाइक हमर डायरी हो, गोटेरी हो, फिशरी हो बा अन्य क्षेत्र मानकरे मत्स्य चाष करिबा ए क्षेत्र रे नियुक्ति बा से माने एंगेज थांती गांगडा अंचल स्पेशल विलेज एरिया रे। सो लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग एंड प्लांटेशन ए सब क्षेत्र रे गांगडा अंचल रे पिला माने सब इन्वॉल्व थांती। So in urban areas, they work in the manufacturing and services sector, mainly manufacturing क्षेत्र रे एवं service क्षेत्र रे। Girls also form a sizable proportion of the working children and their work in household hardly recognized as work. घर गृह मानकरे पिला माने सब विभिन्न क्षेत्र रे गाँ गंडा अंचल रे घरे विभिन्न चाष बास रे इन्वॉल्व थांती। सो सेमाने शिक्षा को भूली जाई थांती टोटली। So सही दृष्टिरू reasons for the existing child labor, socially, economically and educationally illiterate parents don't attach much importance to schooling. जो माने की जो parent माने illiterate से माने schooling हो बा तांकर social, economic, educational illiterate जो parents माने थांती socially, economically and that educationally. So सेमानंकर पिला मानकु सेमाने ध्यान देई न था। So that's why it is create a problem, and that reasons that early dropout from school due to various reasons facilitates their entry into the workplace. Many parents do not think anything wrong if a child is engaged in work. पिला माने तांकर पितामाता माने भाबी थांती जे पिला माने जदी छोटो बेलू if will give more birth, child birth, so that they will engage elsewhere and earn some income and afford their family. पितामाता माने भाबी थांती जे जेते शिशु पिला जन्म हेबे सेमानकु विभिन्न कर्म संस्थान को आमे पठेई दबा एवं सेमाने किछि इनकम करिवे, घरर आर्थिक समस्या दूर हबो। एई भली रॉन्ग कांसेप्ट सो फीडिंग हेकी रही। सो को क्षेत्र रे ना इलिटरेट, लेस लिटरेट फैमिली क्षेत्र रे एवं जो माने की दोज पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड जो माने की गाँ गंडा अंचल रे गाई गोरु छेली मेंढा एवं कुकुड़ा चाष, बतक चाष एमान सब करि थांती। इलिटरेट फैमिली सेमान सब पिला माने अधिका सेमान विभिन्न प्रकार होटल, मोटेल, ढाबा, घरोई काम रे पिला मानक सब नियुक्ति देई थांती। To prevent the exploitation, this is one of the exploitation. यह होची गोटा शोषण, पिला मानक ऊपर शोषण जे जने मुक्त रे जन्म नैची तार भविष्य तो निश्चित भाव रे ए धरा पृष्ठ रे how to grow and develop and to build future, to brighten the future of the children, that depends on the specially the guidance of the parents. So child labor प्रोहिबिशन एक्ट 1986 रे प्रणयन करा जायछि भारत सरकार के तरफ रु। चाइल्ड लेबर, बंडेड लेबर, गोती श्रमिक जो माने गोती श्रमिक गोती भाव रे खटिबा विभिन्न प्रकार होटल, मोटेल, ढाबा मान करे। सो सेति पई 1986 रे
चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट गोटे पास जो माने कि कौन सी गृह रे परिवार नहीं कि पिला माननकु घरोई काम रे लिप्त रखिबे सेमानकु जेल दंड भोगिबा मध्य पड़िथा से परिवार को. So to prevent the exploitation, child labor, 1986 Act plays a dominant role to prevent the child labor. So National Child Labor Policy 1987 adopted a 3-pronged and prompt strategy to combat the problem. ये प्रॉब्लम को चाइल्ड लेबर प्रॉब्लम को ब्रेक करबा पई 1987 ने सरकार गोटे नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी मध्ये इंप्लीमेंट करिसंती प्रोहिबिटिंग द वर्क चिल्ड्रन इन सर्टेन hazardous इंडस्ट्रीज केते गुडी विपदपूर्ण इंडस्ट्री रे पिला माने मध्ये नियुक्ति पाई थांती ताकू सेमानकु सेठारु विपद जनक स्थानरु तांकु सुरक्षा रु आनिकी बाहर करी आनिबा एवं विभिन्न प्रकार ऑक्युपेशन ने. सेकेंडली सेटिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स in areas of concentration of child labor where a comprehensive package of services is provided such as nutrition and education, vocational training, health services, recreation. अनेक सरकार ए 1987 एक्ट रे पिला मानको एई भली विभिन्न प्रकार मोटिवेशनल प्रोग्राम बा मोटिवेशनल स्कीम मध्ये प्रोवाइड करिसंती. Thirdly, covering other developmental programs in areas endemic that child labor so that this family would be brought about poverty line. अनेक आर्थिक सहायता विभिन्न एनजीओ मानक माध्यम रे सर्वे करा जाय पिला माननको किभली विभिन्न विपदजनक स्थान रो उद्धार करा जाय गिरी सेमाननको पाठ पढेबा सेमानकर न्यूट्रिशन स्टेटस को वृद्धि करिबा एनजीओ बा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा व्यवस्था मध्य करा जाय. सो इंडिया रे 10 आइडेंटिफाइड that project areas where the bonded labor involved आज सर्वे फाइंड आउट गोटे सर्वे करा जायतिला जहार हमें देखा गला भारत सरकार देखिबा में पाइले जे 10टी अति गुरुत्वपूर्ण स्थान रे विशेष करी बॉन्डेड लेबर देखा जायथांती बा चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व थांती. सो वॉइस क्लियर होउची तो हेलो हेलो आज्ञा परफेक्टली क्लियर हो सर. ठीक है ओके थैंक यू. बड़ा सैटिस्फैक्शन मते लागेला जे मो ए सब्जेक्ट ता पढौची बोली वॉइस क्लियर न हले किछि लाभ नाही बुझेला. ओके ठीक है. हां सर. सो 10 आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स 10टी भारत सरकार आइडेंटिफाई करिसंती जोठी कि बेसी बॉन्डेड लेबर माने गति श्रमिक भाव रे पिला मानकु अति विपदजनक परिस्थिति रे इन्वॉल्वमेंट करा जाउची. खूब कम मजूरी देगिरी सेमानक लाइफ को फ्यूचर को माने डिस्ट्रॉय कर दउचंदी. सेही भली आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट गुडी को किए से फर्स्ट वन द मैच इंडस्ट्री ऑफ शिवकाशी तमिलनाडु. मैच इंडस्ट्री जो दियासिली कारखाना और बाण कारखाना तमिलनाडु जोटा अछि सेठी बहुत बॉन्डेड चाइल्ड लेबर माने काम करथांती हला. सेकेंडली डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री इन सूरत गुजरात रे सूरत रे मूल्यवान डायमंड फैक्ट्री सब अछि सेठी मध्य पिला मानकु नै गति श्रमिक भाव रे इन्वॉल्व करा जाय. It is very pathetic situation. जोथि पई इंडिया since independent we are in a backward position. भारत को कहा जाउची ए पर्यंत we are in developing not developed. हमर स्वाधीनता एते वर्ष हेलानी सरिलानी हमें एते वर्ष स्वाधीनता निज हाथ रे शासन रखिचंती but we are in developing not developed. Like Japan, America, Britain, German, France, Italy, Australia. आम देशर ना ए पर्यंत ईडी संयोग है नहीं आईएनजी रे चली माने विकास पथरे आगे चली विकसित है नहीं ए पर्यंत संपूर्ण अमेरिका ब्रिटेन जर्मन जापान भली कंट्री मानक भली बुझिबेल. तेणु यही सब कारण एंड पॉलिटिकल lack of political will ये मध्य मुख्य कारण. Thirdly, precious stone polishing industry ने जयपुर राजस्थान जोटी कि स्टोन सब पॉलिशिंग होउची ये गोटे माने polluted area environmentally it very pathetic polluted area
जोठी कि पॉलिशिंग सब करा जाउची कोडाक हमर प्रेशियस स्टोन सब राजस्थान सेठी मध्ये पिला मानकु जो डस्टी क्लाइमेट रहिगिरी बैड क्लाइमेट कंडीशन रहिगी से माने मध्ये इन्वॉल्व रहउछ सो आउ गुड सब होची द ग्लास इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश ग्लास इंडस्ट्री प्रेसवेयर इंडस्ट्री इन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश द हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश ये सब जगह रे द हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर आउ गुड होचंती द लॉक मेकिंग इंडस्ट्री इन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जो ताला सब तयारी होय लॉक अलीगढ़ रो फेमस फॉर लॉक की द स्लेट इंडस्ट्री इन मार्कापुर आंध्र प्रदेश द स्लेट इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश ये सब जगह रे विशेष करी देखा जाय सरकार डाटा सर्वे करी थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर मानक माध्यम रे डाटा सब संग्रह करछन्ती एई सब स्थान मानक रे विशेष करी बॉन्डेड लेबर माने अधिका संख्या रे काम करूछन्ती एवं ताकू मध्ये सरकार बैन करछन्ती सब सो बॉन्डेड लेबर गोती श्रमिक ए पर्यंत आम देश रे स्वाधीनता एते वर्ष हासिल कला परे बॉन्डेड लेबर छवि अति गुरुत्वपूर्ण पिक्चर ए पर्यंत देखा जाउची सो स्टैटिस्टिक्स ऑन द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन इन कंडीशंस बॉन्डेड लेबर आर नॉट अवेलेबल बट many of the full time workers work long hours in conditions of exploitation शोषण एक्सप्लॉइट करा जाउची लॉन्ग टाइम पिला मानको इन्वॉल्वमेंट करा जाउची often their parents have taken loans आशा करा जाउची जोटा कि तांकर पितामाता बोधे सेमानक ठारू चुक्ति करिसंती जे हमकु एतिके लोन देथा हम पिला को तम पाखकु पठेबु काम करिवे एतिके दिन पर्यंत दैट इज वन एग्रीमेंट ये सब बहुत क्षेत्र देखा गया है विशेष कर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड इलिटरेट पेरेंट्स पाखरे किछि लोन ने असले गोटा ऑर्गेनाइजेशन संस्था रु सेठी कोन कले ना ताका पिला को पठे देले 2 वर्ष 5 वर्ष पिला तम पाखरे काम करिवो हमकु एतिकी पैसा दे दियो तेनो बॉन्डेड हे गेले एग्रीमेंट हे गला बॉन्ड भावरे से साइन करा गला अतन देश आगे वो की भली so child labor continues to thrive due to certain reasons prevalence of justified child servitude labor lack of social awareness and sensitization kahi ki सब देखा जाउची this is the reason lack of political will ineffective legal instrument large scale ignorance among children anti childhood development policy and program हम देश जो गुडा को आईनी सरकार कागज पत्र रे स्ट्रांग आईनी करी दउचंती किंतु प्रैक्टिकली फिजिकली द आउटपुट इज जीरो हम देश रे प्रत्येक कार्यक्रम रे कागज पत्र रे इंडिया रे भारत वर्ष रे पूरा स्ट्रांग सब प्रकार आईनी स्ट्रांग अछि किंतु प्रैक्टिकली द आउटपुट इज जीरो तेणु वी आर इन अंडर डेवलपिंग आमे सब बेले से डेवलपिंग 2021 मसिया हला 1947 मसिया रु 2021 मसिया धरिला 2050 मसिया हले भी से डेवलपमेंट चली थिबो आमे जहा पाठ पढिलनु सचेतन हला दिन रु कॉलेज मानकर पाठ पढला दिन आमे देखुची भारत गोटिए डेवलपिंग कंट्री बट डेवलप हेई पारि नै ए पर्यंत पछरे सब देश स्वाधीनता पाई बहुत डेवलप हो सारे कि भारत अंडर डेवलपिंग तापर जीवा ये सब पिला मानकर एजुकेशन न्यूट्रिशन हेल्थ स्टेटस द मेन फैक्टर इज आल्सो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द रूरल चिल्ड्रेन विटामिन न्यूट्रिशन कारण पिला छोट बेलू जो भली विटामिन न्यूट्रिशन मिनरल्स पाई से तार भविष्य कारण आम जानी हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य ही संपद गोटे वीक रुग्ण पिला अस्वास्थ्यकर परिवेश रे रही जेभली पाठ पढ़िबो गोटे सुस्थ परिवेश भितर आनंद उल्लास परिवेश भितर पिलाटी पाठ पढ़िबो यथेष्ट डिफरेंस अछि सेति पई मु सेदिन आलोचना करथली What is the real meaning of a family planning? Better parent, healthier children, and happier home.
This concept reflects everything. Better parent, healthier children and happier home. उत्तम पितामाता मध्य उत्तम स्वास्थ्य धरी जो पिलाटी वृद्धि बढ़ी थाए शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी थाए से परिवार आनंद उल्लास रे गढ़ी उठे सेटा कहते एक्चुअली फैमिली प्लानिंग we commonly believe that to control the birth rate खाली परिवार नियोजन कहले आमे दुई आमर दुई एटा को बुझाए नाही but it reflects to better parent healthier children and happier home एथिरे सबु बार्थ कंट्रोल होई परिवो उत्तम स्वास्थ्य परिवार रे आमे पिला माननकु देई परिबा एवं परिवार सदस्य संख्या ऑटोमेटिकली लिमिटेड हेकि रहइबो कंसाइज हेकि रहइबो छोट परिवार सुखी परिवार से पई कहआ जाय यदि गोटे पेरेंट्स कर पिता माता कर गोटे दुईटी संतान थिबे ताले से पिला दुईटंकु बा जनकु आमे भलो भाबे शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य भलो उत्तम परिमल व्यवस्था भितर रखि परिबा एवं ताकर न्यूट्रिशन ठीक बैलेंस मेंटेन करि परिबा पिला माने भलो भलो भाबरे ठीक भाबरे स्वास्थ्य ठीक रहिले भलो पाठ पढि परिबे तनो न्यूट्रिशन इज इनएविटेबल फॉर द चिल्ड्रन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज द वेल्थ ऑफ ए कंट्री खाली पिलार स्वास्थ्य जे वेल्थ ता पाई नुहे बट वेल्थ फॉर द कंट्री गोटे देश पाई पिलार उत्तम स्वास्थ्यधारी पिलाटी गोटे देशर मध्य संपद अटे कैपिटल कारण आमे कहते ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संबल आमे प्राकृतिक संबल कहते मानव संबल अति गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि थाए वी आर नेग्लेक्टिंग कंटिन्यूअसली द ह्यूमन रिसोर्सेस especially towards education and health we are neglecting so far today जदि गोटे देश बा गोटे राज्य ए दुईटा पॉइंट ऊपर फोकस करा जाए particularly in Odisha the government regularly continuously neglecting health and education department the education and health seriously severely neglected. That's why the bundle labor appears in our states so far today. Bundle labor and unemployment, poverty. ए पर्यंत आम राज्य रे स्वाधीनता रे ते वर्ष परे ओडिशा बहुत पछरे पर्यंत सुधा रही गोटे कथा मुझे कहबी ओडिशा इज ए रिच स्टेट वेयर पुअर पीपल आर लिविंग व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट ओडिशा इज ए रिच स्टेट ओडिशा होची गोटे धनी राज्य मात्र गरीब लोक माने बसवास करंती ओडिशा इज ए रिच स्टेट वेयर पुअर पीपल आर लिविंग व्हाई द रीजन व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट जस्ट आई एम सेइंग टू यू लर्नर्स लिसन केयरफुली we have plenty of natural God's gift natural resources like mineral resources forest resources water resources and main human resources आम राज्य भरपूर रही प्राकृतिक खनिज संबल रे उत्तम माने मानव संबल भरपूर होगी रही बट इट इज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड खनि मूल्यवान खनि एशिया महादेशर मूल्यवान रॉ मटेरियल्स आयरन ओर मैंगानीज बक्साइट कोल पृथ्वी रे अन्य कोनोसी देश रे एते क्वालिटेटिव मिली न थाए फॉर एग्जांपल झारखंड बिहार abundant deposit of natural resources but it is neglected not properly utilized there are natural resources but only the government exporting to foreign countries सरकार राज्य रे देश रे कोन कोचन हम राज्य रे ओडिशा हो बिहार हो झारखंड हो केवल एक्सपोर्टिंग रे लागुछन बुझी परलो कि ये जो सेंटेंस टा हम कहली दैट ओडिशा बिहार झारखंड आर रिच स्टेट्स but poor people are living simultaneously we can compare Punjab Haryana is a poor state where rich people are living Punjab Haryana rich state ame jani chati but Punjab Haryana rich state where poor people are living
Odisha, that is Odisha, Bihar, Jharkhand, rich state where poor people living. But Punjab, Haryana, poor state, rich people are living. किए कहि परिबो हम भितरु हेलो देवव्रत सर सर कहि परिबो सर मु टिके ऑफिस रे अछि बाहर नि खाली जॉइन कर दी अच्छा ठीक है थैंक यू सर अच्छा अभिलिप्सा अंकिता अंकिता कहि परिबो हेलो हाँ नहीं सर सर। कहिलो टिके सर ओडिशाटा होची मिनरल रिसोर्स हमर फॉरेस्ट रिसोर्स वाटर रिसोर्स रे बहुत रिच स्टेट किंतु हमर जहा किछि जो किछि रिसोर्स अछि सेटा बाहर को एक्सपोर्ट कर दिया होची तेणु कि हमर हम राज्य रे जो लोक माने अछंती से माने गरीब अवस्था रे रहउछंती आ जोडा ड्यू कि पंजाब हरियाणा ए ड्यू बाहर को टू एक्सपोर्ट कर lack of political will and ओके lack of strategy and planning ओके सर आमर उपयुक्त योजना कौशल अभाव राजनैतिक इच्छा शक्ति अभाव जोटा कि आम देश रे ताकू लार्ज स्केल इंडस्ट्री आमे एस्टाब्लिश करि पारु नांती ओके बड़ भारी शिल्प गुरु शिल्प आमे एस्टाब्लिश करि पारु नांती क्रिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन इन ओडिशा जो गोटे बड़ बड़ कंपनी आसुचंती बड़ बड़ कंपनी जो गुडा आसुचंती ताकू पॉलिटिकली ताकू बायस करा जाय ताकू फपड़ दिया जाउची सेमान को एंट्री करा जाउनी so that's why we are having unemployment and poverty we are facing regularly yes or no lipsa Yes, sir. And another thing I think is the lack of better human resource. I mean, the skilled human resource. Because due to lack of education, people are not able to select the thing which is good for them. So this is one of the most, I mean, disadvantage for the people of Odisha and Bihar, all these states. now our question was only focus point that is that Odisha is a rich state where poor people are living Punjab Haryana Punjab Haryana are poor states but rich people are living because hello lipsa Yes, sir. I'm listening. Oh, sir. Punjab Haryana rich a poor state where rich people are living what are the reason behind it सर ସେଇଟା ସେଇ Because, sir, they have their infrastructure development. hello pk sahu ko question to pk sahu सर सेठी सर मानव संबल बहुत इफेक्टिव अछि आउ एठी गवर्नमेंट रा पॉलिसी गुडा को बहुत भलो आम गवर्नमेंट ओडिशा आउ हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट रे तांकर होची आपण काम करंतु टंका नियंतु चलंतु किंतु एठी हमर विदाउट एनी वर्क रे लोक मान को सुविधा गुडा बेनिफिट रा दिया जाय तनु लोक मान yes to some extent you are okay to some extent your answer is okay but actually answer hoji they have no abundant deposit of natural Punjab Haryana re natural lack of shortage of natural resources there is no mines but industrially is highly developed ଆମର heavy machine tool ଯେତକ ଆସୁଛି ଦେଖିବ ଫରିଦାବାଦ made ଫରିଦାବାଦ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଯେତେ machine tool ସବୁ ଆସୁଛି but there is shortage of mines they are importing Odisha Bihar Jharkhand they are expanding their industry ଯେତେ industry ଦେଖିବ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ରେ ଯେତେ motor vehicle parts ସବୁ ପଞ୍ଜାବ ରୁ ହରିୟାଣା ରୁ ସବୁ ଆସୁଛି so they are highly रिफाइनरी तो पानीपत रे आगे आइछ हरियाणा रे रिफाइनरी इंडियन right so concept clear होला तो बुझि पाइलो हेलो लिप्सा लिप्सा बुझि पाइलो हाँ सर बट हमें ह्यूमन रिसोर्स को भी तो कंसीडर करि परिबा ना बिकॉज़ ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट हाँ हाँ ह्यूमन रिसोर्सेस हम कहली द हेल्थ ऑफ नेशन ह्यूमन रिसोर्सेस सो पिला मानन को हमें छोट बड़ न्यूट्रिशन स्टेटस दे करी वृद्धि करेबा टू कीप चाइल्ड हेल्दी फूड इन राइट क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड food is the chief source of essential materials which the body needs for its well-being these essential materials are called nutrients
Good food is indispensable for health at all stages of life and satisfactory growth during infancy, childhood and adult skin. आमे ignorant करी दउछन पिला माननकु specifically we are neglecting female child than male child. पिलाटी जेतबेले female child टी घरे जन्म होची समस्त ताको नेग्लेक्ट करछन तार न्यूट्रिशन खाइला केते न खाइला केते बंचिला केते संसारु गला केते किंतु मेल चाइल्ड जन्म हले ताको केयरफुली we are maintaining, we are giving nutrition, proper care, schooling, etc. Because functions of food, nutrition कौन हमारे बॉडी रे फंक्शन करे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन दरकार, एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट दरकार, एक्स्ट्रा एनर्जी गिविंग फूड्स, फैट दरकार, सो प्रोटेक्टिव फूड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स दरकार. ए बडी सब न्यूट्रिशन फूड हमर सब दरकार पड़े थाए पिला मानकु. सो बैलेंस डाइट दरकार, फूड रिक्वायरमेंट्स दरकार, रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, रिक्वायरमेंट फूड्स, क्वालिटेटिव फूड्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड सेतबेले हमकु मध्य दरकार पड़े थाए. सो डाइट फॉर चिल्ड्रन at various age groups, some important points we should give in priority. As like the diet for of a children should contain energy, protein, calcium, iron, vitamin. गोटे पिला को आमे किबली सुस्थ सबल भाव रे गड़ी परिबा. न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कौन सृष्टि होची कौन पई आमे देई परना देनी पिला मानकु विटामिन ए डेफिशिएंसी, iron deficiency due to by which anemia, iron deficiency hale. So anemia is widespread among the women and children. महिला मान क्षेत्र रे आयरन शॉर्टेज ता बेसी देखा जाय छोट पिला एवं महिला मान क्षेत्र रे सेति प्रति हमकु ध्यान देबा पई पड़ी था. Nearly half of children are undernourished in our country. Malnutrition, it's malnutrition. So many infants are not giving solid food early enough. Many are vulnerable to iodine deficiency. बहुत पिला न्यूट्रिशन आयोडीन डेफिशिएंसी रे मध्य सफर होई थांती. डाइटेड गाइडलाइंस हमें मेंटेन करबा पय दरकार पिला मन पय डाइटरी गाइडलाइंस. ब्रेस्ट फीड एडिशनल मेसेज फॉर द चिल्ड्रन. हमें एडिशनल कौन सब दे परिबा ठीक समय पर्यंत ब्रेस्ट फीड सेमी सॉलिड दबा उचित. तापर इंट्रोड्यूस सेमी सॉलिड फूड पिला मानकु फीडिंग यंग चाइल्ड की भली यंग पिला मानकु ठीक उपयुक्त न्यूट्रिशन दबा. डोंट रिड्यूस फूड इन इलनेस बा असुस्थ समय रे हमें मन रे गोटा कांसेप्ट अछि जे खाद्य कमाई दबा से भलिया मेंटेन करबा उचित. वी शुड कंसल्ट विथ फिजिशियंस, वी शुड कंसल्ट विथ द डॉक्टर्स. कीप द फैमिली and surrounding clean. परिवार को ठीक क्लीन परिष्कार गुड एनवायरनमेंट में रखवा उचित. ताल पिलाटे को हम किभली पढेबा सुस्थ परिवेश भितर ड्रिंक क्लीन वाटर. छोटो छोटो कथा को ध्यान देबा उचित. छोटो छोटो कथा को हम नेग्लेक्ट करि थांदी जोथरे पिला माने विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत होई थांदी. आयोडीन डेफिशिएंसी थाए, विभिन्न प्रकार वायरल डिजीज रे पिला माने छोटो ब्याग करंटा कोन हेलो. सो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट सेति पय आगे बहु परिमाण देखा जाउतला एबे धीरे धीरे कमी गलानी. काहे के होतला चाइल्डहुड डिजीज, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या द्वारा से समय रे बहुत पिला मृत्यु मुख रे पडुथले. सो हेल्थ केयर फैसिलिटी वर्तमान यथेष्ट परिमाण रे आगे गलानी. मोर्टालिटी रेट धीरे धीरे कमी गलानी. The poor health and nutritional status for rural women, महिला माननकु उपयुक्त न्यूट्रिशन विटामिन दिया जाउची. रिपीटेड इन्फेक्शन रो हमें कंट्रोल करि परचंती. मैटरनल एज को हमें ठीक भाव मेंटेन करि परचंती. एवं आगे जेबली इन्फेंट मोर्टालिटी होथला इट स्लोली कमी गलाय. तापर आ द्वारा हमें सब विभिन्न प्रकार हमर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 रे हमर सब गठन करा जायछि. नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम सब मेंटेन करा जायछि. नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम,
नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये सब विभिन्न प्रकार स्वास्थ्यगत स्टेप सरकार नहीं ड्यूरिंग 2002 लॉन्च different programs objective of achieving acceptable standard of good health among the general population of the country, and specifically we should focus to the children. तो सही बड़ी हमें देखिबा जे education of rural children current that urbanization universalization of education यूनिवर्सल शिक्षा को आम सार्वजनीन किभली करि परिबा विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सरकार हाथ को नहीं ड्यूरिंग 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन सेट द स्टेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्ले एन इंक्रीजिंग इंपोर्टेंट रोल इन प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी शिक्षा को गुरुत्व प्राथमिक शिक्षा को गुरुत्व दवा पाई सरकार 1986 मसीह जातीय शिक्षा नीति प्रचलन कले जहा फल आमर ताकू कह जाए कोठारी कमिशन जो 10+2+3 इत्यादि स्टार्ट हला कोठारी कमिशन का माध्यम रे सो वर्तमान एबे सेटा मध्ये चेंज हे कि नुवा एजुकेशन पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान लागू करिवा पई सरकार रेडी हेले सेते बेले पिला मानक पाठ पढा ड्रॉप आउट पिला मानक किभली ब्रेक करा जिवो सेति पई सरकार 1986 मसिया रे मध्ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम नै थिले डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट इंप्लीमेंट करथिले 1988 मसिया डाइट गोटा अनुष्ठान गठन हला टोटल लिटरेसी कैंपेन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग एबल जो विभिन्न प्रकार डीपीपी प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एबल जो विभिन्न प्रकार प्रोग्राम सब सरकार हाथ को नैथिले अच्छा तापर आउट सब कोन अर्ली चाइल्डहुड केयर सब किभल नियातला अर्ली चाइल्डहुड केयर द अर्ली इयर्स आर इंपोर्टेंट पिला मानकर अर्ली इयर्स बहुत इंपोर्टेंट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इंक्लूडेड अर्ली चाइल्डहुड केयर इवन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सो the experience that the child has in the early years will determine the outcome of this stage of development. Early childhood होची बहुत important पिला मानकर मूल गछर मूल गछटी जेभली ग्रोथ हबो वृद्धि हेले सेभली शाखा प्रशाखा मेले भल फल धरिबो पिलाटी जदि छोट बेलु हम रुगुण करि दबा ताले पिलाटी आ भविष्य रे तार मेंटली मानसिक स्तर रे से संपूर्ण भाव रे वीक हे दिबो सो सेति पई आईसीडीएस गठन करा जाय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्री प्राइमरी स्कूल क्रेचेस रन बाय एम्प्लॉयर्स सो विभिन्न प्रकार तापर आउ सब गठन करा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये सब सरकार सब हाथ को नहीं ये सब लॉन्ग क्वेश्चन गुड़ा तमे कवर करिवो जे एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन गुड हेल्थ फॉर द न्यूट्रिशन गुड हेल्थ फॉर द रूरल चिल्ड्रन ये सब लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर कवर करछि जेबली एजुकेशन फॉर रूरल चिल्ड्रन व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्राम has been undertaken by the government of India during different time periods for education in rural children. No question never so. Health ro gota long question, education ro gota long question. तापरे apart from this integrated child development services जोटा के ICDS को होता है एटा गोटा लॉन्ग क्वेश्चन जीवो आईसीडीएस गठन करा जायछि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबली कंसीडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच सिस्टम हेलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम जोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अछि ताको ओडिया रे कहा जाय राष्ट्र निर्देशावली नियम चतुर्थ स्तंभ रही गोटे गुरुत्वपूर्ण स्तंभ आमर संविधान जोटा अच्छी पार्ट आईवी चतुर्थ परिच्छेद अनुच्छेद जो थे कि भारतर 14 वर्ष पर्यंत पिला माने विभिन्न प्रकार शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग फ्री रे सरकार पाइबे से आईसीडीएस गठन करा जायछि एंड से हिसाब से आम देश को गोटे मंगलकारी जनमंगल राष्ट्र भाव में परिणत करि परिबा
So national policy for children acknowledge that since a majority of India children live in economic and social environment, live in bad conditions, which can impede their physical, social, and mental development, and special intervention are required. Special intervention required to provide equality opportunity and quality nutrition and education to the children. So the ICDS program provides an integrated approach for covering basic services for improved child care. ICDS होची main objective होची ये child care ऊपर पिला मानंकु nutrition एवं vitamin खाद्य जोगान करिबा एवं तांकर health checkup करिबा psychologically, physically, socially आमे कि भली सेमान पिला मानंकु development करिबा तापर improve the nutrition and health status of the children below the age of 6 years एमान सब विभिन्न प्रकार 6 years पूर्वरु तांक सब डेवलपमेंट करेबा तापरे हेल्थ चेकअप करेबा डिलीवरी सिस्टम हेल्थ चेकअप इम्यूनाइजेशन रेफरल सर्विसेज ए सब आईसीडीएस तरफ रहउची सप्लीमेंटरी फीडिंग ए सब आईसीडीएस तरफ वर्तमान कार्यकारी होची न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन अर्ली चाइल्ड केयर तापरे ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन ये सब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम रे सब करा जाउची सरकार हाथ को सब नै जंती The objective of this scheme others कौन अच्छी to improve the nutrition and health status of the girl child especially in this age group to provide them required literacy and numerical skill through non-formal stream of education to stimulate a desire for more social exposure knowledge to help them improve their decision making capabilities पिला माननकु बाहर एक्सपोजर करबा दरकार पिला माने जदी घर भीतर कन्फाइंड हे के रहले दे विल नॉट बिकम आउटरीच एंड आर गेन बिकम गेनर एंड लर्न समथिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस सो हाउ द चिल्ड्रन विल बिकम आउटरीच एंड दे मस्ट मेक देम एक्सपोजर टू प्रमोट अवेयरनेस हेल्थ हाइजीन न्यूट्रिशन होम मैनेजमेंट चाइल्ड केयर एंड फैमिली वेलफेयर ये सब आईसीडीएस तरफ प्रोग्राम सब सेटिंग करा जायछि एटा को जे स्पेशल इंटरवेंशन प्रोग्राम आईसीडीएस रो गोटा लॉन्ग क्वेश्चन मन रखेता व्हाट डन बाय आईसीडीएस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम सो आईसीडीएस टीम का को कहै जाय आईसीडीएस टीम होछि कंप्राइजेस अंगनवाड़ी हेल्पर आईसीडीएस रो टीम अछि आईसीडीएस अंडर रे गोटा जाउछि अंगनवाड़ी हेल्पर अंगनवाड़ी वर्कर्स सुपरवाइजर एवं सीडीपीओ जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर सीडीपीओ ताको कहंती ये सब गोटे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट टीम एटा गोटा एमाने समस्त पिला माननको किभली न्यूट्रिशन हेल्थ एवं लिटरेसी कैंपेन रे इन्वॉल्व होई टीमटा बढ़ाइबो आ केते दूर एटा जस्टिफाई तमे माने निश्चित भाव मोठारो अधिक जानिछ ना कौन आईसीडीएस प्रोग्राम जहाँ मिड डे मिल दिया जाउची पिला मानु किभली रेफरल करा जाउची तांकर हेल्थ डिग्रेडेशन कले बा किभली से माने भलो एनवायरनमेंट रहउचंती मिस्टर पीके साहू भलो भाबे जानिथिबो म भाबुची ना कौन हेलो पीके साहू श्योर सर जानि सर निश्चित भाबे हमें समस्त ए विषय रे माने विज्ञान भलो भाबे जानिछु हाँ सर ता विषय आलोचना करिया दरकार नै बुझि भइला ना नै इट इज सर अंडरस्टूड सर इट इज अंडरस्टूड सर okay अंडरस्टूड so integration and coordination training refresher training ये सब दिया जाउची माने आईसीडीएस तरफ रु टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मॉनिटरिंग ये सब जहां दिया जाउची आईसीडीएस तरफ रु so let us today I am going to mark the full stop here in my learning class and sir, thank you very much sir, thank you for your support and innovative idea for your learning system sir and thank you very much sir, have a nice day sir thank you very much और शॉर्ट टाइम शॉर्टेज है योजनल बहुत कथा हम डिस्कशन करते बुझ पइला ना घंटा हो जाउची एक्चुअली हां
जो माने सर रियल जो माने रियल एजुकेशनलिस्ट जो माने चाहती रियली किछि ज्ञानटा सर बांटिले बड़े ना तो जो माने आज्ञा प्रकृत रे अच्छा पिला मानु को भल पांदी से माने चाहती मो पिला मानु को अधिक ज्ञान देबी तो निश्चित थुनु करी एठी टाइम गुटे जिंस जो माने प्रकृत रे अंतर भीतर जार स्पृहा थाए जा पढेवा पे सर से तांको पई टाइम जणा पड़ेनी तांको हाँ सेटा मत जोटा आपण एक्चुअली पई टाइम बहुत सर माने वी 1 आवर भितर ମୁଁ वन ତ आवर ଜାଣିଲି भितर ସାର୍ मत बहुत बहुत कथा ହଁ चिंता माने मन को आसुची किछु किंतु प्रकाश करि पारुनी माने बहुत ମାନେ लिमिटेड ଟାଇମ୍ टाइम ସାର୍ ସେଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି हाँ ସାର୍ ଜାଣିପାରୁ हाँ ए बहुत स्पीड रे मते बांधे कहया पे पडुची किछि तमर प्रोब्लेम होई थाई पारे मु भाबुची ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ हाँ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ हाँ मते अवश्य जते वर्ष ला मु क्लास करूची पिला माने आर सो सैटिस्फाइड सो ହଁ दैट ସାର୍ ହଁ किंतु बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम it is ହଁ impossible to explain details ହଁ and ସାର୍ ହଁ interesting point I could not represent in front of you ହଁ in front of learners so that it is, touches my heart. ସାର୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Okay, thank you. Good night to all. ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ହାଭ୍ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ Good night. Good night. Thank Good you, night. sir. Good night. Thank you, sir. Chandan, hello Chandan. Chandan sir. Hello Chandan sir. आज्ञा सर Okay. I closed here in my counseling class.